Now, students, in continuation to earlier video lecture study which I have given, I am going to further explain the air quality. That is, dry air is the mixture of different gases. Example, it contains nitrogen and oxygen and various other gases in traces. Traces में बहुत से gases होते हैं उसमें, जैसे कि तुम्हारा say argon, carbon dioxide, sulfur dioxide, so many gases are there, but major quantity is your nitrogen and oxygen. Now we treat the air as ideal gas following PV is equal to RT. जो एयर होता है उसको हम लोग ट्रीट करते हैं आइडियल गैस की तरह से, और आइडियल गैस हमेशा PV is equal to RT इक्वेशन फॉलो करता है. सो द टोटल प्रेशर ऑफ द एयर दैट इज shown by PT is equal to PA plus PW. PA is the pressure of the dry air and PW is the pressure of water vapor or wet air, wet portion. PA is the pressure of partial pressure of dry air and PW is the partial pressure of water vapor. Okay, so main air contains two parts. Now we will go for the hygrometer. There are two type of hygrometer, but the sling hygrometer, it is very important and very common. It gives you directly the reading of the dry bulb temperature and wet bulb temperature. What is there? One frame is there, two thermometers are there. One is simple thermometer only, DVT, and another is having wick in the bulb. मतलब गीला कपड़ा लगा रहता है बल्ब में और यहाँ से हैंडल से हम इसको घुमाते हैं. When we rotate it, we get the temperature of the dry bulb temperature and wet bulb temperature. Both temperature are read from this sling psychrometer. This hygrometer we are having in the lab also. I have given the requisition for the purchase of this hygrometer. Then comes specific humidity W, that is the mass of the water vapor divided by mass of the air, and that is mass of the water vapor PV is equal to RT relation use करें. PVV volume is the same for both the air, so putting temperature will cut out and we will get the relation, that is W is equal to PV upon RV, PA upon RA. R क्या है? Gas constant, that is universal gas constant R dash divided by molecular weight. So molecular weight water के लिए 18 और MA for the air 29. So from here we will get the value of RA and RV. We will putting that value and we will get that W is equal to MV upon MA into PV upon PA. M molecular weight है, वो M यहाँ आ जाएगा ना, MV upon MA आ गया यहाँ पर, उसकी वैल्यू हमने रखा 1829 PV upon PA. ठीक है. सो वी नो दैट PT इज इक्वल टू PA प्लस PV. शुरू में ही हमने इक्वेशन में दिखाया आपको, PT इज इक्वल टू PA प्लस PW, और दैट आल्सो इक्वल टू PV वाटर वेपर एंड प्योर एयर. सो वी गेट द इक्वेशन specific humidity is equal to 0.622 PV upon PT minus PV. This is called the specific humidity of air, and value can be find out numerically. PV, PT, PV अगर मालूम है हमको तो हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं. Then RH is given by MV upon MA or phi is equal to PV upon PS. PV is equal to MRT होता है relation. This is the relation. M is equal to PV upon RT. So from where we can get phi. Phi की वैल्यू हमको निकल जाएगी. PV is the partial pressure of the water vapor at any stage and PS is the partial pressure of the air. PS is the partial pressure of the vapor at saturated stage. Saturated means it is completely filled with the water vapor, then it is called saturated stage. Okay, next page I will move, and that is your again saturation ratio, that is W upon WS. W क्या है तुम्हारा? W जो specific humidity at particular point, और WS is the specific humidity at the saturated point. We are putting the value for both and we are getting the relation PV upon PVS bracket में PT minus PVS
divided by Pt minus Pv. So this is the saturation ratio that is given by this equation. नाउ एडियाबेटिक सैचुरेशन क्या होता है? एडियाबेटिक सैचुरेशन आप लोग यूज़ करते हो, डेजर्ट कूलर गर्मी में यूज़ करते हो ना, तो सपोज करो ये एक पाइप है, पाइप क्या में इंसुलेटेड पाइप है और एंटरिंग एयर का टेम्परेचर T1 है, W1 उसका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, H1 उसका एंथैल्पी है, आउटलेट एयर का T2 है, H2 है और W2 है, टेम्परेचर, एंथैल्पी एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. सो और HW जो है इसके अंदर जो वाटर है वो कूल हो रहा है, उसकी ह्यूमिडिटी, उसकी एंथैल्पी HW है. तो वी गेट द रिलेशनशिप फाइनल दैट इज फॉर द H2 एंड दैट H2 इज गिवन बाय H1 प्लस W1 minus W2, W2 minus W1 into HW. This is the final equation. If we have to find out the enthalpy of the outlet air, we can directly use this relation. We can get it. Now एक न्यूमेरिकल हमने दिया है इसमें. Find the partial pressure of the air at RH 50% and 20% dBT dry bulb temperature. So हमको दिया हुआ है RH दिया हुआ है 0.5, PV हमको निकालना है और ये बोल रहे हैं कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर 24 degree centigrade dBT. At this temperature we can find out the pressure from the steam table. Saturated pressure हमको डायरेक्ट मिलेगा steam table से, that is 2.486 saturated pressure at 24 degree centigrade dBT. ये steam table से हमको मिलेगा. So we can get the value of PV, we can calculate, and that is coming 1.493. Okay. Now the sensible heat. सेंसिबल हीट Cp dt, Cp डेल्टा T होता है और Cp डेल्टा T वही लिखा T2 minus T1, एक्चुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो टोटल हीट इज गिवन बाय सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट एंड QS is the sensible heat and QL is the latent heat. Okay. Then various thermodynamical properties. वेरियस थर्मोडाइनमिकल प्रॉपर्टी साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर हमने दिखाने की कोशिश किया है. सबसे पहला है बेटा फर्स्ट, दैट इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर. ड्राई बल्ब टेम्परेचर वर्टिकल लाइन होता है साइक्रोमेट्रिक चार्ट में. देन दिस इज योर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, दैट इज kg of water vapor divided by kg of dry air. All the horizontal lines are there. Then third one, that is relative humidity line. Relative humidity line 100% यहाँ लास्ट में हो जाता है, यहाँ से शुरू होता है. देन दिस इज WBT लाइन, इंक्लाइंड लाइन. डायरेक्टली हमको WBT 100% RS वाली लाइन पर सीधा हमको WBT इससे मिल जाता है साइक्रोमेट्रिक चार्ट से. देन एंथैल्पी, अगर ये WBT लाइन को हम आगे बढ़ा दें तो यहाँ पर एक एंथैल्पी की लाइन दी रहती है, तो वो डायरेक्टली रीडिंग हमको एंथैल्पी की देती है. देन लेस इंक्लाइंड लाइन, ये तो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड लाइन होता है, ये थोड़ा सा कम इंक्लाइंड लाइन होता है, दैट गिव्स यू स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन, डायरेक्ट हमको यहाँ मिल जाता है. तो यू सी फ्रॉम द साइक्रोमेट्रिक चार्ट वी आर गेटिंग सो मेनी थिंग्स. उसके बाद फिर तुम्हारा वेपर प्रेशर की लाइन. वेपर प्रेशर की लाइन राइट हैंड में भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड में भी हो सकता है. दैट इज mm of mercury, that is given in the mm of mercury. And besides that, one sensible heat factor line is also there at the right hand side. वो छोटा लाइन होता है, वो right hand side में भी दिया रहता है. Okay, so this much is sufficient for today. Thank you.